So in the next, this is the main topic for today, characteristics of abiotic things. We will discuss abiotic things very clearly and very explanatory manner. So first is air. What is air? Without air no living being can be. सभी को पता है without air no living being can live. कोई भी living being without air जिंदा नहीं रह सकती है. So in this there are the three major gases which are present in air. Oxygen 21%. You have to learn this value. If anybody asks you what is the percentage of oxygen in air, it is 21%. If anybody asks you which is the most abundant gas, that is nitrogen. इन सबसे ज्यादा कौन सी है? It is 78%, which is nitrogen gas. Second is carbon dioxide gas. It is 0.03%. Okay, carbon dioxide is its percentage is 0.03%. You have to learn this. Okay, what is the percentage of oxygen? 21%. Nitrogen 78% and carbon dioxide 0.03%. Next, the most important topic of air, layers of air. First of all, you have to learn this that layers of air are the protective layer of earth. Means ये आपकी earth को protect करती हैं layers. This is our earth. हमारी earth के ऊपर 5 layers हैं. There are 5 layers on the earth. First one is troposphere जिसमें हम रहते हैं. Second is stratosphere. Third is mesosphere. Fourth is thermosphere. And fifth is exosphere. You have to learn this. So thermosphere is also called ionosphere. इसको क्या बोला जाता है? ionosphere भी. ठीक है. Next is the distance between these layers. The first layer whose distance is 20 km from the earth. Second is stratosphere whose distance is 50 km from the earth. Next is mesosphere layer whose distance is 80 km from the earth. Next is thermosphere layer whose distance is 700 from the earth. And exosphere is 10,000 meter above. Okay. Now, when you goes upright means जब आप ऊपर जाएंगे तो उतनी ही एयर की जो लेयर होगी वो थिक होती जाएगी, मीन्स पतली होती जाएगी जितना आप ऊपर जाएंगे. ओके, मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही कम होती जाएगी जितना आप अपराइट जाएंगे, ऊपर जाएंगे. ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रोपोस्फियर लेयर, जिस लेयर में हम लोग रहते हैं. इसमें आपकी आती हैं योर बिल्डिंग्स, माउंटेन्स and climate changes takes place in troposphere layer. Okay, understand? Second is stratosphere layer. This is the second layer and which contains ozone layer. In this, ozone layer is present which protect you from the ultraviolet rays of sun. Sun की harmful rays होती हैं जिससे आपको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, जो कि कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में. इसमें क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज आपको स्किन कैंसर कॉज करती हैं, आइज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर लेयर विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. एंड द एरोप्लेन फ्लाइज इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर. एरोप्लेन इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. ओके, योर प्लेन. नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर लेयर. दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर. ये आपकी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है. एंड नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फीयर लेयर एंड दिस इज द हॉटेस्ट लेयर. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर विच इज द अपर लेयर. इन दिस लेयर लाइक एनी एस्ट्रॉइड कम नियर टू योर अर्थ, अगर हमारी अर्थ के नियर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, सो इट्स द फंक्शन ऑफ थर्मोस्फीयर लेयर दैट इट विल मेल्ट इट. थर्मोस्फीयर लेयर उसको मेल्ट करेगी, एस्ट्रॉइड को, स्टोन को, पत्थर को. नेक्स्ट उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया थर्मोस्फीयर लेयर ने. Then mesosphere layer is the coldest layer which convert it into the meteors form. Means small stones के form में कौन convert करेगा इसको? mesosphere layer. And which is the coldest layer. Okay. और shooting stars जो आपके appear होते हैं वो इसी layer में ही appear होते हैं. ठीक है. These are called meteors. So I will repeat again. Troposphere layer is the first layer.
second is stratosphere layer, third is mesosphere, fourth is thermosphere, and fifth is exosphere. Thermosphere is also called ionosphere. थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोला जाता है. ओके. सेकंड वन इज इट्स डिस्टेंस. ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 700 किलोमीटर, and next exosphere is 10,000 kilometer above from the earth. When you goes upright in these layers, layer will be become thinner, sorry, पतली होती जाएंगी आपकी जो अर्थ की लेयर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर लेयर कंटेन्स माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, and your weather changes takes place in troposphere layer. Second is stratosphere layer, which contains the ozone layer, and ozone layer protect you from the harmful ultraviolet rays. ओजोन लेयर आपकी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, सन की हार्मफुल रेज से. और एरोप्लेन्स आपके इसी ओजोन लेयर से डाउनवर्ड ही फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में. देन थर्ड इज मेसोस्फेयर लेयर, व्हिच इज द कोल्डेस्ट लेयर, एंड थर्मोस्फेयर लेयर इज द हॉटेस्ट लेयर, एंड इससे अबव होती है अपरमोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर लेयर, व्हिच कंटेन्स द सैटेलाइट्स. ओके. इफ एनी एस्ट्रॉइड कम नियर टू द अर्थ, अगर कोई एस्ट्रॉइड मीन्स कोई स्टोन, कोई पत्थर अगर आपकी अर्थ के पास आ रहा है तो उसको थर्मोस्फेयर लेयर क्या करती है, मेल्ट कर देती है. इट विल मेल्ट बाय द थर्मोस्फेयर लेयर इफ एनी एस्ट्रॉइड कम नियर टू योर अर्थ. देन मेसोस्फेयर layer cools down that stones and appears these stones in the form of shooting star. मीन्स जो कि आपको टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एक एस्ट्रॉइड होता है जो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इतना गर्म होता है, जिसको मेसोस्फेयर लेयर क्या करती है, कूल डाउन करती है. और अगर वो अर्थ पर गिरे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर स्मॉल स्टोन कोई हमारी अर्थ पे फॉल डाउन हो रहा है. जितने भी आपका जो इंटरनेशनल स्पेस शटल वो है, वो भी थर्मोस्फेयर लेयर में ही है. ठीक है. नेक्स्ट इज uses of oxygen. You have to learn this. I will explain you what is the use of oxygen. Oxygen is represented by O2. This is the representation of oxygen. What is the use of oxygen? Oxygen is used for breathing and burning. ऑक्सीजन यूज की जाती है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और बर्निंग के लिए, आग लगाने के लिए. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ आई प्लेस अ कैंडल, बर्निंग कैंडल, एंड आई पुट अ ग्लास ऑन इट, इट विल क्या होगा बेटा, वो नहीं जगेगी, बर्न नहीं होगी, बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन. सो बर्निंग नीड्स ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. Like ventilators, we use ventilators as a artificial respiration. Means oxygen hospitals में भी use होती है. Next is mountaineers, जो कि mountains पे climb करते हैं. Astronauts, जो कि space पर जाते हैं. Sea divers, जो पानी में swim करते हैं, water में. So they carry oxygen cylinder with them. Next is ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं. देन जो रॉकेट्स होते हैं, आपने रॉकेट्स के पीछे देखा होगा बहुत फायर लगती है. दिस इज द कंबशन ऑफ फ्यूल. मीन्स वो फ्यूल जलता है बेसिकली और प्रेशर इंक्रीज होता है. सो उस रॉकेट में कौन सी ऑक्सीजन यूज की जाती है, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन. Next is uses of carbon dioxide. What is the use of carbon dioxide? Carbon dioxide is used by fire extinguishers. If anywhere कहीं पे फायर हो जाए या कहीं पे बर्न हो जाए तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं. सो उन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स में क्या होता है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. And carbon dioxide gas is represented by CO2 gas. Okay, it is represented by CO2. CO2. Okay. Yes, it is used in fire extinguisher. Carbon dioxide gas is used by fire extinguisher.
देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो घर पे रेफ्रिजरेटर होता है आपने देखा होगा, जहां पर हम वाटर टू आइस कन्वर्ट करते हैं वाटर को, सो वहां पर एक प्लेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, solid carbon dioxide gas, that is also called dry ice. It is used in aerated drinks. जितनी भी आप ड्रिंक्स लेते हैं, like cold drinks, soda water drinks, these all contains carbon dioxide gas. Then plants use करते हैं carbon dioxide gas for their food, prepare their food, अपने food को prepare करने के लिए। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन यूज करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मेकिंग अमीनो एसिड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? अमीनो एसिड यूज, सॉरी, नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिससे वो अमीनो एसिड बनाते हैं और अपने खाना बनाने के लिए, स्टार्च स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आई विल रिपीट अगेन, व्हाट वी डिड टुडे इज विदाउट एयर, without air no living being can live. विदाउट एयर कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रह सकती है। वट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? 21%, नाइट्रोजन 78% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। Next, we did the layers of air. There are 5 layers of air: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. These all layers are protective layer. Troposphere layer contains mountains, buildings, and climate changes. Stratosphere layer contains the ozone layer, which protect our Earth from the harmful ultraviolet rays. Then mesosphere layer contains meteors. And then thermosphere layer contains the space shuttles. And then exosphere layer contains the satellites. Then what is the use of oxygen? Oxygen is used for breathing and burning, in hospitals for respiration, mountaineers and sea divers as a oxygen cylinder. It is needed by aquatic plants or animals also, and it is used in rocket also. Next is carbon dioxide. You have to learn these uses. Carbon dioxide is used by fire extinguishers to stop the fire. It is used in the form of solid carbon dioxide gas. It is called dry ice. It is in the refrigerator. जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं घर पे, उसमें आपके क्या होता है, जहाँ पे आप आइस क्यूब्स फॉर्म करते हैं, वहां पर क्या होता है, आज अपने रेफ्रिजरेटर में देखना, पीछे एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्लेट होती है, सो दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देन इट इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। जितने भी आप सोडा वाटर, लिम्का, कोका कोला पीते हैं, उसमें भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयर देयर फूड। नेक्स्ट इज इट इज नीडेड बाय प्लांट्स एनिमल्स फॉर मेकिंग एमिनो एसिड। नाइट्रोजन को N2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।